today's lecture is business letters. Okay, I have already uploaded this document. Um, okay, and it is business letters. This is a lengthy document, right? So like you can find things in details, and if you want to have more understanding you can read it from there. We are going to discuss formats of business letters today in the class, and after that if you have any confusion you can just consult the document, you can read it from there, and you will understand, okay, what is a business letter, what is the part of the letter and how it can be written, or what is the format of a letter, or you can find some sample as well, that how, if we have this particular letter, how will we write that. Okay, so we have some samples in this document, you can just take help from that. I want to discuss how the letter should be written, or what should be the language for writing a letter, or what is a business letter, or we can say how to write or how to interact in business, mm, um, in business like scenario, or in how like we do business interactions. Okay, so business interaction is a bit different from other social interactions, right? जैसे हमारे पास social sciences हैं and other academic disciplines, and particularly like what we write or the written communication in business interaction is a bit different from other social sciences and academic disciplines. ठीक है? Because business writing strives to be crisp and like it should be concise rather than creative. Like we do not go for creativity in writing when it is like a business setup, because you have to run the business. And like when we see in companies and organizations या फिर जो भी institutions हैं, there when you write applications, when you write letters, or when you write memos, or even it can be a proposal, or it can be a report. ठीक है, so over there you need not to struggle for creativity कि आप कितना creative है. Like you can bring creativity in essay writing, essay writing, या फिर कोई ऐसी एकेडमिक राइटिंग हो जैसे नॉवेल्स हो, स्टोरीज हो, आप पोएम लिख रहे हैं, सो और देयर यू कैन ब्रिंग क्रिएटिविटी एंड सम टाइम यू कैन ब्रेक द रूल्स एज वेल. लाइक टाइम जो ग्रामर के रूल्स है यू कैन ब्रेक दोज रूल्स एज वेल. बट इन बिजनेस राइटिंग इट शुड बी कॉन्साइज, इट शुड बी क्रिस्पी, लेकिन इतना क्रिस्पी भी नहीं होना चाहिए दैट इट शुड लाइक not be a blunt message. ठीक है, blunt message नहीं होना चाहिए. Sometime you can go for a passive sentence, sometime an active sentence, but depending on the situation which sentence should follow. ठीक है. Now ये बातें तो I'll discuss later on, that how to write a business or what should be the like the content for, or what should be the language for writing a business letter. Business letters are basically the written communication, or it's the written interaction between companies or among companies, or we can say within the members of a single organization or a single company, right? So for small businesses, letters are very important because they write letters or they interact through letters. ठीक है? Over there we have to follow some professionalism. So to follow professionalism or to keep that professional image, you need to write letters. Like you can interact through WhatsApp, you can interact through Viber, you can interact through Facebook or Twitter, or so many medias are there. Okay, so you can interact through those media, but like the main or the appropriate we can say type of interaction between business like among the members of business setup is basically writing a letter. Okay, people say that business letters are now obsolete, and we can say letters are now obsolete and we do not write letters, but
if we see and it is replaced by emails. But if we see the overall structure of email is just like a letter, it's only the medium is changed, that's an electronic medium, okay? But even then, if we compare business letters or the written communication to the emails that we send through electronic medium, okay, uh, emails are not that much trustworthy, while business letters are trustworthy. Like you can trust them and you can keep them as a written record for yourself. Like you can say anybody can make an email ID and they can send you an email, right? And by the end of the day they can even deny that, and that could be a very serious message, okay? तो इसलिए at one hand, like we at one side we can say that emails are more effective because you can send emails within seconds to other countries or things like that. But if we see in localities, जैसे हमारे अगर विद इन पाकिस्तान या फिर विद इन वन प्रोविंस वी हैव अ बिजनेस सेटअप, सो ओवर देयर यू विल ट्रस्ट लेटर्स मोर देन ईमेल्स, ठीक है? तो एक साइड पे हम emails को we can call them effective, but at the other hand, like we cannot deny this thing कि business letters are vital for running a business, ठीक है? So they are vital or they are very important for running a business. ठीक है? So any business will have to correspond in writing with its customers, branches, suppliers, bankers, and other with whom it has or would like to have a lasting relationship. Now this is not only limited to बिजनेस सेटअप के आप कोई कंपनी या प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ आप लेटर्स लिखेंगे. इट कैन बी the simple application that you write to your chairman, chairperson, or any particular teacher for requesting him or her about a thing, for a thing, ठीक है? or for example, if you want to make a request to your chairman for a computer lab या किसी भी चीज के लिए, if you want to make a society or to join a society, you will be writing letters or you will be writing application. So application is basically a formal letter that you write, ठीक है? Or you can write a report about your lab work, ठीक है? It can be in the form of a letter to your teacher. So that should be, how can you write that report? Because nobody is going to read about your stories, that how like in what circumstances you conducted that one, और फिर आपका language check नहीं करेंगे, ठीक है? There would be language check, but there wouldn't be like they won't be able to read the creativity. जैसे आप report लिखते हैं तो उसमें आपकी creativity की कोई ज़रूरत नहीं है. The thing is that you should write some crispy sentences and some concise sentences in order to save time, right? आपका अपना time भी और किसी और का time भी, ठीक है? Because they won't have that much time and there are bundles of reports they have to check, ठीक है? तो जितना आपका crispy और concise होना चाहिए उतना ही ठीक है, ठीक है? So business letters serve as a means to reach out to people not only within the locality and neighborhood but also in other cities and nations, right? So they represent you when you conduct transactions in writing. They have become such an integral part of everyday business that one cannot think of running a business without the related correspondence. Okay? So they are like vital for running a business. They are the integral parts. You cannot deny. We have notices on the notice board. We write letters. For example, if there is any complaint, okay, against a teacher. So if the chairman or the chairperson of a particular department is blunt, he can make a call or message the person directly. लेकिन अगर वो blunt नहीं है, he is tactful, he can write the letter or he can report the person कि आपके साथ ये जो मसला है, please solve this problem, ठीक है? So that's a tactful way. So business letters, we cannot deny that it's not there. It's always there, ठीक है? Though there are many modern communication methods available these days, the traditional business letters still retain their importance in the business world for the following reasons. अब यहाँ पे इन लोगों ने बहुत सारे reasons बताए कि like sometimes if you want to convey a complex message जो आप बात पे नहीं कर सकते, आप फोन पे नहीं कर सकते, so you will be writing a letter या फिर एक application लिखते. एक और बात है,
when you go and you when you request your chairman या फिर किसी भी higher authority को and you request for something, so what they ask you के write an application, ठीक है, वो application आप लिखते हैं, फिर उसके बाद वो process शुरू हो जाता है, right? So like you cannot trust something कि आप verbally कोई बात करें. So if a message is complex, the appropriate way is to write it, ठीक है, और it's to write it in the form of a letter. अब यहाँ पे कहते हैं कि जैसे आप अपना पर्सनल जैसे लेटर्स हमारे होते हैं, जैसे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को हम लिखते हैं in order to keep a relationship with them. Now it's not personal letters हम अब बहुत कम लिखते हैं, ठीक है, because we have phone, cell phone में बहुत सारे ऐसे apps हैं though that we can keep our personal relationship with them in a bit better way, and like we can keep that alive. But for business relationship, to keep that relationship alive, we have to write letters, ठीक है, we have to write letters to our customers. आप जब भी कोई चीज ऑर्डर कर लेते हैं, राइट, सो व्हेन यू वांट टू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम पेज या किसी भी, जैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, ठीक है, सो व्हेन यू पुट एन ऑर्डर और व्हेन यू प्लेस ऑन एन ऑर्डर और आप उनको लिखते हैं कि यू नीड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू दिस एड्रेस एंड योर नेम इज दिस, ठीक है, एंड यू हैव अ फोन नंबर एज वेल, सो दैट इज particularly a business letter. And so the customers keep typing letters or sending letters to businesses or companies, okay? So that order is basically a letter or an email that you send to them. And they are the appropriate message, as I discussed. They serve as permanent records. जैसे मैंने आप लोग पहले बता दिया कि they are permanent records and are a valuable representative of information which you can refer to in future, right? So in future you can refer to a letter कि आपने ये letter मुझे लिखा हुआ था, in response I give this reply या फिर ये जो भी मतलब, तो by the end of the day one cannot deny कि हाँ वो letter उसने नहीं लिखा था. So they are the permanent written records that people keep with them. So they help you reach a large and geographically diverse audience, thereby enabling you to save money on telephone calls, ठीक है. अब ये इतना important reason नहीं है but to save money on telephone calls और ये सारी, but still like you cannot deny the importance of business letters in a business setup, ठीक है. अब यहाँ पे इन लोगों ने बहुत सारे purpose बता दिए कि what is particularly what is the purpose of writing a letter. So the purpose of writing a letter is sometimes to inform people about an idea, sometimes to like a new idea, it can be an innovation or it can be an invention या कोई भी चीज के बारे में. For example, आपका chairman या फिर आपका जो हायर अथॉरिटी है या फिर कोई ऐसा प्रोफेसर हो जिसको एक न्यू आइडिया का पता हो and there is an innovation and they want to share it with you, they can just post it on the pages और फिर they can even write a letter, ठीक है, to the people. और बहुत सारे मतलब when you are like working in organization, so if there is an information they will always report the things in the form of letters or notices, ठीक है, तो you cannot deny its importance. So you can be informed about a thing, or sometimes even if a company is making some products and they are good, okay, for people, so they can inform people about that particular products, the characteristic of those products, and even the packages that they keep for the people, okay, तो उसके बारे में भी inform करते. To congratulate means to when you have a good wish for the people. जैसे कोई अगर somebody is selected in a company या फिर an organization, so they always write a letter that you are selected in this firm, ठीक है, you can join us on this day or from this date, ठीक है. तो कुछ लोग emails भेजते, कुछ लोग letter भेजते, तो वो जब letter receive हो जाता है and people are so happy. To inquire about a product, to order a product, ठीक है, और something, or to request somebody to collect dues, to complain. So if you order a product and that's not up to the mark, it's just an example. Complaint can be against anybody. Complaint can be against a product, can be against an idea, can be against a person, okay? So
if there is a complaint against somebody, and you cannot just say it on phone call or SMS, you can write a letter, ठीक है, to make an adjustment. Adjustment उस letter को बोलते हैं कि sometime when you order products and they are not up to the mark, so what you are going to do is to make a complaint or by writing a letter, और फिर उस complaint के reply में what they do is that they make adjustments. जैसे आप लोग कोई product ऑर्डर कर लेते हैं, फिर आप लोग वापस भेजते हैं कि इट वाज नॉट द सेम थिंग आई वाज ऑर्डरिंग, ठीक है, तो फिर वो जो मनी पे बैक कर लेते हैं उसको, या फिर उसमें कोई और प्रोडक्ट दे देते हैं और मनी का जो जितना भी एडजस्टमेंट हो जाता है, सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ दोस थिंग्स के वो कैसे उन लोगों ने एडजस्ट किया, दैट इज अ सिंपल एडजस्टमेंट लेटर, ठीक है. तो एडजस्टमेंट लेटर कैन बी in any shape, for adjusting any product, adjusting any issue, ठीक है. To sell a product or service or a scheme, so they are sale letters. जैसे भी कोई companies अगर कोई product sale कर रहे हो, so they will go for the advertisements, ठीक है. To apply for a job, this is the cover letter. I'm going to discuss this in detail. आज अगर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट क्लास में I'll be discussing cover letter. इसको to apply for a job, इसको हम लेटर एप्लीकेशन लेटर बोलते हैं, या फिर कवर लेटर इसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको जॉब एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है. व्हाट इज अ जॉब एप्लीकेशन? Like when you get your degree, this engineering degree, after 4 long years, so what you are going to do, that the first document you will be writing is the CV or your resume. For example, अगर आपके पास ये डिग्री है तो you will be writing or composing your CV just to drop it somewhere to a potential employer to hire you for a post, ठीक है. तो उसके साथ कभी कभी there is a need for writing a cover letter with to enclose it with a resume to drop it somewhere in organization, ठीक है. तो वो CV के साथ cover letter का होना जरूरी होता है, ठीक है. या फिर इसको हम कहते हैं job application, in order to convince the person that you are the only fit or the suitable person for that filling that post, that particular job or post or vacancy, ठीक है. So I'll be discussing this, how we write cover letters or job application, and it is just like the personal statement that you write in while applying for scholarships, ठीक है. उसमें और इसमें थोड़ा सा technical issue है कि difference है. That the technical difference is that over here you go for the addresses, ठीक है. You add your own address, the receiver address, और उसमें format का थोड़ा सा मसला है, ठीक है. While in the personal statement you just start from yourself, what you are, who you are as a person, ठीक है, और ये सारी चीजें. तो personal statement तो मैं आप लोग को एक काम, आई वांट टू गिव यू अ होमवर्क, आप जरा पर्सनल स्टेटमेंट पे थोड़ा सा मेहनत कर ले and start writing your personal statement from now, because at any time you can get a scholarship, and when you will be applying for that scholarship you won't have that much time to sit and think about yourself and write the personal statement. So when you get such scholarships, and then you will be asked कि write your personal statement to apply for it, ठीक है. अगर कोई ऐसा मौका है, if there is any opportunity, तो आपके पास पहले से पर्सनल स्टेटमेंट होगा, फिर आप उसमें एडिट कर सकते हैं कुछ ऐसी चीजें, बट एटलीस्ट यू वुड हैव रिटन अ पेज, ठीक है. एक पेज पे कुछ लिखा होगा, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट, and I hope you will do so, because you will be needing personal statement in any case, ठीक है. तो just start writing your personal statements के आपका मतलब this is something that what is your purpose of living this life actually, or getting a degree, or having a status or social status. तो आपका जो statement है आपका क्या है, what do you know about yourself, ठीक है. I'll be providing you some samples, तो आपके CR को मैं send करती हूँ, या फिर मैं सारे उसमें क्या कहते हैं उसको
ये सारे जितनी भी मेरे पास सेक्शंस हैं मैकेनिकल के, सब लोग, हाँ जी, यही मैं कह रही हूँ कि सारे सेक्शंस को मैं सेंड कर रही हूँ, वो सैंपल, और उसी क्लासरूम को में देख सेंड के करो। आप अपना पर्सनल स्टेटमेंट थोड़ा सा बनाएं, ठीक है। तो व्हेन वी गेट टाइम वी कैन, आई कैन चेक दैट फॉर यू, ठीक है। अब तो नहीं, लेकिन पर्सनल स्टेटमेंट अब नहीं, अब मैं सिर्फ कवर लेटर्स को चेक करूंगी, लेकिन जब भी यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह खुल जाएगी तो फिर उसके बाद आई कैन चेक योर पर्सनल स्टेटमेंट, यू कैन कम टू मी एनी टाइम टू माय ऑफिस एंड आई विल चेक दैट, ठीक है, अगर अल्लाह ने चाहा और यूनिवर्सिटी खुल गई तो, ठीक है। सो राइट, सो कवर लेटर उसको बोलते हैं। नाउ आई वांट टू ओपन अनदर टैब। ठीक है, आप लोग को ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? ठीक है। यस मैम। सो बिजनेस लेटर्स आर, they are basically a formal type of interaction. नजर नहीं आ रहा, लेकिन चले अभी नजर आ रहा, ठीक है। बिजनेस लेटर्स इज अ फॉर्मल इंटरेक्शन। अब as I said that there are so many types of purposes of writing a business letter. You like, you will be ordering something, or if you want to inform people, or if you want to complain against a product or an idea, या फिर कोई भी चीज, जैसे आप लोग अभी तो आप लोग को इस चीज का अंदाजा नहीं है, but when you get to uh, into your practical life, or when you will be working in organizations and institutions, you will see that you will be having all these problems, ठीक है। तो आप कंप्लेन भी करेंगे, ऑर्डर भी करेंगे, ये सारी चीजें, तो ये अभी से सीख ले that how to write a professional letter, because you have to keep an image of professionalism for yourself, कि आप कितने प्रोफेशनल है, what format are you applying in the letter that you are writing, क्योंकि इसमें as I said कि over here you do not bring creativity in your language, you should not bring creativity, because bringing creativity needs to have यूजेज ऑफ कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, जिसमें हमारे पास दो तीन फ्रेजेस इकट्ठे होते हैं और फिर उससे बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। तो जो वो लंबे लंबे सेंटेंसेस हम बनाते हैं, those sentences are used in essay writing, in novels or stories, because over there we have to keep continuity and we have to keep creativity, okay, just to create an image in the reader's mind. But in business letters we do not want to create an image in the reader's mind, we just want to convey a particular message to them, okay. तो बिजनेस लेटर्स में the creativity or we can say the professionalism that you can bring in that letter is just to follow a particular format, okay. And if you are following one format, you have to follow that format till the end of your letter. So आपका फॉर्मेट ठीक नहीं है, आपके सेंटेंसेस ग्रामेटिकल इनकरेक्ट है, एंड यू हैव सम ब्लंट लैंग्वेज, ठीक है, तो वो ब्लंटनेस that destroy your creativity and your image particularly, because you might have seen that in business interactions we always keep an image for ourselves, we always keep professionalism, ठीक है। हम कहते हैं ना ये बंदा बड़ा बेवकूफ है, इसमें तो कोई प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है, he is not a professional person. So what does that mean कि आप लोगों के साथ आपका जो पर्सनल लेटर है, that format is a different one. You have to keep a particular format for keeping a professional image for yourself, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं that you have to keep in mind कि आपका जो क्रिएटिव तो नहीं होना चाहिए, but at least you should have a particular format and you should have correct language, grammatically, spelling wise और pronunciation wise भी correct होना चाहिए, ठीक है। तो जो स्पेलिंग आपके इनकरेक्ट होंगे तो जाहिर बात है आपका
प्रोनाउंसिएशन भी गलत आएगा, राइट। तो इसके लिए हमारे पास जो वन थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू, इसके जो इसके राइटिंग का वो है तरीका है, इज दैट सम टाइम वी यूज प्रोनाउंस, ठीक है। प्रोनाउंस में कौन कौन से हैं, जैसे आई डिस्कस दिस विद यू इन द प्रीवियस क्लास एज वेल, कि जैसे आई वी है और यू है, ठीक है। सो आई वी प्रोनाउन इज वी एटीट्यूड, or this you pronoun is you attitude, ठीक है। So these personal pronoun as I, we and you are important in letters and memos, ठीक है। These are important to write because a decision that you are making personally is that you have to use I pronoun. If that decision is made collectively by any organization, then you have to use we pronoun. If you are like keeping the desires and the interest of the people in a particular letter or interaction, you have to use you pronoun, ठीक है। As I discussed in the previous lecture कि आपने और use of you भी नहीं करना। You have to keep this in mind कि आपका जो एक you जितना आपका अगर negativity, if it brings negativity, for example as I discussed in the previous lecture कि if there is a mistake done by any customer or any employee, ठीक है, or you are the employer of that organization, so if you are using this you pronoun और आप उनको कहते हैं you have done this thing or you just made a mistake or things like that, ठीक है, instead of using that you over there, it brings negativity in the, or it brings harshness or it brings bluntness, or it can just damage your professional image, ठीक है। So in order to be courteous or polite, you have to use we pronoun, that we can improve our writing by adding these things in that letter, ठीक है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात है कि it is perfectly appropriate to refer to yourself as I and to the reader as you. Be careful, however, when you use the pronoun we in a business letter that is written on the company's stationery, since it commits your company to what you have written. When stating your opinion, use I. When presenting company policy, use we. ठीक है, तो जब भी अगर आप कंपनी की बात करते हैं तो यूज वी, बिकॉज इट्स नॉट यू ओनली, इट्स द होल कंपनी, इट्स द पीपल हु आर वर्किंग देयर, ठीक है। And the best writer strives to achieve a style that is so clear that their message cannot be misunderstood. एक तो आपकी clarity बहुत important है. If you are using some strong words, चाहे जितना भी आपके पास vocabulary है, but that word is not understandable or clear or not familiar for the reader, for the customer, you are writing things for them, ठीक है, तो उसमें फिर आप that's not a good message to convey, ठीक है। So आपका clearness अच्छा, clarity should be the first priority. So one way to achieve a clear style is to minimize your use of passive voice. एक बात है कि हमारे लोग जो है कभी कभी it's like in the whenever we have complaint letters, एक और बात मैं बताती हूँ कि we normally use passive voice, ठीक है। ये पैसिव वॉइस तब हम यूज कर सकते हैं इन अ बिजनेस लेटर when it is a negative message, when it is a complaint letter. जैसे for example if you are rejected in a company or for a scholarship जो आपने apply किया है और वो आप रिजेक्ट हुए उसमें, ठीक है, तो जब आप रिजेक्ट होते हैं when they write a letter to you, तो वो ऐसे नहीं लिखेंगे नहीं भाई you are rejected in this or you are not suitable for that or you weren't eligible, ठीक है, आप वो नहीं लिखेंगे। अगर लिखते हैं तो that's a blunt message, ठीक है। What they are going to write, अगर professionalism, if they want to keep professionalism, they will write it in this way कि I hope you will we went through your documents, जैसे आपने documents send किए हो और फिर भी आप select नहीं हुए तो वो ऐसे reply करेंगे, we went through your documents and that was excellent, right, you are having good grades or things like that. और फिर दरमियान में ऐसी बात करेंगे, they will start with a very good or pleasant message कि we went through your documents and it was good and you were having good grades.
तो फिर दरमियान में ऐसे मैसेज करेंगे कि बट अनफॉर्चुनेटली योर एप्लीकेशन इज अमंग दोज एप्लीकेशन which were not selected for the scholarship, right? So that's a passive message. The whole thing goes on the application. It's not like they aren't referring to themselves कि उन्होंने आपको reject किया, they rejected you or they rejected your application or they kept your application in the rejected applications, ठीक है? तो वो कहेंगे but unfortunately your application is among those applications which were rejected, ठीक है? अब ये किसने reject किया, that's a passive voice, लेकिन सारा काम सारा कुछ एप्लीकेशन पे पड़ गया, इट्स नॉट देम, उन्होंने खुद को भी निकाल दिया और इस बंदे की भी तारीफ की है, ठीक है? सो एंड फिर उसके बाद कहेंगे कि आई होप यू विल कीप अप्लाइंग टू स्कॉलरशिप्स एंड यू विल गेट सम गुड पोजीशन, ठीक है? तो उसको खत्म कर लेते हैं. दैट्स अ बफर स्टेटमेंट दैट वी यूज इन लेटर्स, ठीक है? लेकिन वो बफर स्टेटमेंट तब यूज करते हैं एंड लाइक व्हेन वी हैव सच सेंटेंसेस, दीस सेंटेंसेस दे आर कॉल्ड बफर स्टेटमेंट्स, ठीक है? इसको हम बफर स्टेटमेंट्स बोलते हैं. बट these buffer statements or these passive voice sometimes they aren't necessary. Then you have to look at the context के अब पैसिव वॉइस हमने कहाँ पे यूज करना है, ठीक है? यहाँ पे कहते हैं कि although the passive voice is sometimes necessary, often it is not only make your writing dull but also can be ambiguous or overly impersonal, ठीक है? तो जब sometimes it can be ambiguous, बहुत ambiguous हो जाता है कि ये काम किसने किया है, ये who is responsible for doing that thing, right? So in order to avoid this ambiguousness or ambiguity, then you need not to use passive voice in such sentences. Here is an example of the same point stated in passive voice and in the active voice. जैसे passive voice में अगर मैं use करूँ, the net benefits or subsidy were grossly estimated. जैसे मैं एक statement लिखती हूँ, the net benefits of subsidy were overestimated. Sorry for my typing. अब ये देखें, the net benefits of subsidy were overestimated. अब ये एक that's a passive sentence. अब ये किसने ऐसा कुछ किया है, ठीक है? तो who did that overestimation? Who, ठीक है? तो in such sentences अब you have to be very clear, ठीक है? तो you have to look at the context. If you aren't hurting the person and you aren't bringing ambiguity in the statement, then you have to go for the active voice, ठीक है? लेकिन अगर आप कहते हैं कि that's not a good message to be heard by the customer or by the receiver, so then you can go for the buffer statement. As I said कि अगर कोई complaint है against a person, against a product, या फिर कोई rejection letter है, so you have to use some buffer statements in that. And as I said कि आपका buffer statement कैसा होना चाहिए. But you see, when we have a situation where there are, like, it brings ambiguity in the text and it brings we can say a dullness in the text, then you need to go for the active voice of it. जैसे अब इसका active voice कैसा होगा? For example, अब मैं इसका active voice बनाती हूँ. Just hate this application. Okay, so I can make an active voice that the global finance team grossly overestimated the net benefits. The global finance team grossly overestimated the net benefit.
अब ये सेंटेंस अब वो नहीं है, वो सेंटेंस नहीं है एग्जैक्टली कि उसको एक्टिव बनाए, बट this is just an example. Okay, this is an passive sentence that brings uh, we can say ambiguity कि किसने ये ओवर एस्टिमेशन की है. एंड द ग्लोबल फाइनेंस टीम, अब आप एक बंदे का नाम नहीं ले रहे, बट यू आर just referring to a team that they overestimated. ठीक है, तो आप सिर्फ एक बंदे का नाम नहीं ले रहे, but you are just referring to the whole team. तो at least उसमें the person is there, the subject is there. ठीक है, तो you have to look at these things के benefit subsidiary जो है वो किसने किया है. So यहाँ पे you can see the subject, you can see the doer of the action. ठीक है, तो इस तरह की चीजों में आपने you have to like go for the active voice. अब specific भी होना चाहिए, your message should be specific. ठीक है, आप जनरलाइज या जो आप मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि you cannot beat about the bushes, you cannot talk about some sweeping statements, right? You have to be specific. बहुत ऐसी सारी चीजें हैं that we have to keep in mind. अब तो मैंने सिर्फ प्रोनाउंस की और पैसिव वॉइस की बात की है कि आपने उसको कैसे यूज करना है. You can take help from the document that I have shared. I want to discuss formats today. ठीक है, now there can be so many purposes of writing a letter to inform people. तो उसको हम कहते हैं information letter, या फिर उसको हम कहते हैं कि there can be to order something, तो order letter बोलते हैं, follow up letter, adjustment letter, cover letter, sale letters, complaint letters, letter of recommendation if you want to recommend some a person to a company for a scholarship, for an ad, या किसी भी चीज के लिए आप किसी को recommend करते हैं, तो वो recommendation letter कैसे लिखते हैं. तो बहुत सारे हैं on the basis of their purpose के for which purpose or which aim you are writing the letter, so that's the name of the letter. अब when you Google this business letters, आप इसको Google में डालें and search it, you will see there will you will find a list of business letters. ठीक है, but on the basis of structure, I want to discuss on the basis of structure today. ठीक है, on the basis of structure we have some formats. ठीक है, और वो formats क्या है? There are 4 basic formats of writing a letter, and they are full block, modified block, semi block, and semi modified block. Right, so we have these 4 formats to follow for writing a business or to keep professionalism. Now before going into the discussion of full block, modified block, we need to discuss the parts of letters, क्योंकि अब parts of letters हमें पता होंगे, फिर then we can format something. ठीक है, so there are some parts of letters that we need to discuss, and they are important to know. Sorry for my spelling mistakes and everything. ठीक है, I'm sorry for everything, but I have to make mistakes. Parts of letters are, the first one is the heading. There are some parts of letters that we need to know. The heading, we can call the heading as the letter head. Okay, we can call it return address. इसको हम return address भी बोलते हैं, because like people can return or give you a reply or response on the same, we can say on the same address that you provide to them. So letterhead is the first element of the letter that you write. अगर आप कोई application लिखते हैं, जैसे मैंने आप लोग को पहले भी कहा है कि the application that you write to your chairman or chairperson or किसी भी higher authority को जो that you write, उसमें letterhead क्या होगा? उसमें होगा जैसे कोई भी name, ठीक है, कोई भी नेम हो, जैसे समद अली
ठीक है, स्टूडेंट ऑफ सेकंड सेमेस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यूईटी पेशावर, सो दैट्स द रिटर्न एड्रेस। तो वो अगर फिर जवाब देंगे तो वो नोटिफाई भी कर सकता है, एंड दे कैन इवन कॉल यू, फिर आपको मतलब इन्फॉर्म कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। सो दैट्स द लेटर हेडिंग। बट इफ इट इज अ कवर लेटर, या फिर उसको हम कहते हैं जॉब एप्लीकेशन, सो इट विल इंक्लूड द नेम ऑफ द पर्सन, and it will include the phone number of the person. It will have the email address, or the address of the company he is working or she is working, or the house address, ठीक है। तो इन दोनों में से एक, if you are working in a particular organization and you want to switch your career from that organization or company to another, you will be writing a cover letter, ठीक है। तो उस cover letter में you need to go for the company address। तो वो फिर अगर आप you are eligible for that post, so they can call you or they can send you a letter on the same address that you have provided, ठीक है। The same is the case with the house। अगर आपका किसी भी कंपनी में काम नहीं कर रहे, you have a house, ठीक है, तो you can go for the address of the house, and if you are selected for the job, or if they want to call you for the interview or demonstration or test, so they will just send you a letter in the same house address, or even they can email you on the email address, they can make a phone call to you, ठीक है। So you need to give the name, your proper name, your phone number, your email address, your company, but email address should be some official address, ठीक है। आपका जो hotmails और ये सारी चीजें हैं, you should not use them, it doesn't look good, ठीक है। तो लेटर हेड ये हो गया। Then we have a second one which is the date, ठीक है। डेट का जो फॉर्मेट है, देयर आर टू बेसिक फॉर्मेट्स दैट वी फॉलो फॉर राइटिंग द डेट। लेटर हेड के बाद वी राइट द डेट, वन लाइन स्पेस छोड़ के वी राइट द डेट, और डेट में there are two formats that we follow for writing the date, and that is British format, the other one is American format, okay। So American format और British format में फर्क ये है कि British का जो है we write the day, month and year, ठीक है। For British we write the day, then month and then year, ठीक है। And for American what we do is that the first one is the month, then the day, or then the year, ठीक है। तो day कैसा आ सकता है? We can have, oh God, just hate the ape. An example is 6 September 2020, ठीक है। It can be 6th of September 2020, ठीक है। September के बाद we can put a comma, ठीक है। And it can be the 6th of September 2020, ठीक है। If you are putting the, so you need to put off as well, ठीक है। अगर आप द यूज कर रहे हैं तो आप बी यूज करना चाहिए, the 6th of September, ठीक है। तो you see this is the month and this is the day and this is the year, ठीक है। अब इसको अगर अमेरिकन स्टाइल में लिखूं, ठीक है, so September 6 2020, ठीक है। You can even write September as full, ठीक है, September, और इस तरह ये फॉर्मेट्स है हमारे पास। अब ये थोड़े से अगर हम इसको देखें, देयर इज एन एम्बिग्विटी। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि जैसे हम स्लैश में लिखते हैं, जैसे 2/3/2020, ठीक है। अब ये क्या हो गया, फॉर एग्जांपल दिस इज ब्रिटिश टाइम, अब मैं अमेरिकन लिखती हूँ 3/2020,
2/2020, ठीक है। अब देर इज नो डिफरेंस एट ऑल, अब हमें नहीं पता ये महीना है, ये कौन सा स्टाइल है, ठीक है। सो और हियर ये देर इज एन एम्बिग्विटी, सो देर इज एन इंटरनेशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है। सो उसमें फिर जैसे अगर इन ऑर्डर टू अवॉइड द एम्बिग्विटी इन राइटिंग द डेट दैट विच इज द मंथ विच इज, जैसे हम स्लैशेस में लिखते हैं तो हमें यहाँ पे पता नहीं था चलता कि विच वन इज द करेक्ट डेट, वेदर इट इज द मंथ और द डे, ठीक है। तो एक इंटरनेशनल जो बनाया, जैसे हमारे पास अगर आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी हो तो बायोलॉजी में एक है कि जब एनिमल्स को या प्लांट्स के नेम्स जो है उनको बायोलॉजिकल नेम्स दिए हैं, ठीक है। वो बायोलॉजिकल नेम्स इसलिए दिए हुए बिकॉज कि हम एक लोकल, वी कैन नॉट जस्ट यूज द लोकल name of a plant or an animal that is not familiar, that local name is not familiar in the other corner of the world, ठीक है। So there is a global naming जिसमें फिर plants और उनको biological names दिए, तो so that is known for, जो भी पढ़ता है, जो भी जिनके पास भी नॉलेज है तो उनको समझ आती है व्हाट इज दैट प्लांट और व्हाट इज दैट एनिमल, ठीक है। तो इस तरह डेट्स को भी इन ऑर्डर टू जस्ट रिमूव द एम्बिग्विटी देयर इज एन इंटरनेशनल स्टाइल, and that international style is basically या फिर उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जिसमें हम ईयर को पहले लगाते हैं, then we put the month and then we put the day. अच्छा, एक बात मैं बताती हूँ, why we are needing these things to learn। जब भी आप आइल्स को देते हैं, आइल्स का टेस्ट या फिर इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, फॉर स्कॉलरशिप्स के लिए, जब यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि उनका क्या ट्रेंड है, वो इस चीज को माइंड तो नहीं कर रहे हैं, तो आप the best way is to write the standard format, ठीक है। if it is for UK तो you can go for the UK style, you can go for the अमेरिकन स्टाइल, ठीक है, अगर आप अमेरिका में किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। और इसमें फिर देयर इज नो एम्बिग्विटी, जैसे 2020 है और डॉट, और अब ये सब को पता है कि स्टैंडर्ड अगर ईयर पहले आता है तो उसके बाद मंथ आएगा, उसके बाद डे है, ठीक है। सॉरी, जैसे 3 and dot 2, ठीक है। So an international one is basically the year, month and day, that's the international standard, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सबको पता है कि कैसा होता है, ठीक है। तो इट्स ऑलरेडी नोन कि दैट इज ईयर, उसके बाद मंथ और फिर उसके बाद डे। सो दैट वाज basically the format for writing the date. फिर उसके बाद we have a third one, and that is the receiver address. रिसीवर एड्रेस इज बेसिकली द इनसाइड एड्रेस, जब आप लेटर के अंदर कोई एड्रेस देते हैं, एंड हु इज रिसीविंग, ठीक है, हु इज द रिसीवर ऑफ द particular letter, so that is, we can also call it inside address, and it includes sometimes the name of the person when you know the person personally, and the title of the person is there, and having the address of the company, ठीक है। और समटाइम द हाउस एड्रेस, अगर कोई कंपनी में वो काम नहीं करता, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो ठीक है। अब अगर आप, इफ यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन टू योर चेयरमैन, तो ये कैसा एड्रेस होगा, रिसीवर एड्रेस, इट विल बी चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूएट पेशावर, ठीक है। सो दैट्स द टाइटल ऑफ द पर्सन चेयरमैन और चेयरपर्सन Department of Mechanical Engineering, UET Peshawar. So it's the address of the organization or the company, ठीक है। So you can go the Mr. Ali or Mr. Wilson, CEO, organization, this organization or that organization, या ये company वो company, ठीक है। So inside address में you need to go for the name of the person and the title of the person, but mostly we start with the title of the person, ठीक है। So titles can be Mr. It can be Mrs., it can be doctor, it can be professor, or it can be engineer, ठीक है। So all the titles,
So to have a professional image, you need to start with the title of the person. Okay? And then after that, we have a fourth one, that is the body. Sorry, that is the salutation. Salutation is basically जैसे हम भी किसी भी conversation को, if we start any conversation, we first say salam. Okay? So salutation is just like the greeting. So we call it the greeting. Okay, and the greeting we can like write it in this way: dear sir, dear madam, Mr. Ali, Mr. Hamza, Miss Saima, like that. ठीक है, so this is आप इससे भी शुरू कर सकते हैं, आप टाइटल भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आप लिखा हुआ है, ठीक है, और आप डेयर हमजा, डेयर साइमा या डेयर अली या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंड यू कैन समटाइम गो फॉर द रिस्पेक्टेड, बट यू शुड keep this in mind कि आप किस डिपार्टमेंट में लिख रहे हैं, what is the organization और organization का setup क्या है. तो always go for the respected, ठीक है, always go for the respected in Pakistan. अब कोई ऐसा organization है respected madam जहाँ पे like if they do not mind this dear, because dear is such a normal thing, like you can use it for sir, madam or people, ठीक है, you can even go for the name of the person. Now in salutation in Pakistan लोग बहुत mind करते हैं चीजों के. एक there was a call back in 1 year back, ठीक है, और वो एक डिपार्टमेंट से there was a technology, I do not want to mention the name of the technology, लेकिन उनके चेयरमैन ने मुझे कॉल की बेसिक साइंसेस डिपार्टमेंट को, and they were asking के if there is any English teacher. तो जब मैं आई and then I picked the call और फिर मैंने पूछा कि what's the problem. So he was asking about this thing कि मैडम there is a letter और उसमें लिखा हुआ है कि the chairperson, ठीक है, तो मैं तो I'm a man and I'm not a person and it is written for a female. तो इस तरह की चीजें, तो like people can mind anything, right? And like it was like I can't believe that, I was so shocked. Chairperson is, we use chairperson for when we want to give respect to people. That's something neutral. जैसे person है तो person can be a male or a female, ठीक है. Man है तो man is specifically used for a male, ठीक है. अब women है और woman है तो it is specifically used for a female. So if we are using chairman, that's a bit discriminatory. So if we are using chairperson, that's not a neutral one and that's not discriminatory. And out of respect, we write chairperson. Okay. So then I told that this was out of respect. उन्होंने आपको chairperson लिखा हुआ है. लेकिन अगर आप लड़ना चाहते तो बेशक लड़े, उनको कॉल करें, उनको कहें कि next time you need to write chairman, फिर उसके बाद I'll read the letter, ठीक है. So anything can be like, people can mind anything. So then you have to keep this in mind कि in which culture are you writing the letter. अब एक और बात भी है, when you are writing dear sir or dear madam in America, they can mind this thing. वो कहेंगे madam sir this is not acceptable. अगर उनके वहाँ पे बहुत बड़े लोग भी, अगर प्रोफेसर्स भी हैं, so they will expect you कि आप उनका नेम ले लें, ठीक है. So वो सर और मैडम को माइंड करते हैं. So you have to keep this in mind कि if you are working somewhere abroad, तो आपने इस चीज को नोट करना है that in that culture or that society what they use or what is their habit. So accordingly आपने वो चीज करनी होगी, ठीक है. Mainly they go for the last name of the person, ठीक है. In the salutation, जैसे अगर हमारे पास है हमजा अली, so you will be writing dear Ali,
ठीक है। तो पाकिस्तान में तो इस चीज को ज्यादा नोट नहीं किया जाता, बिकॉज in Pakistan mostly the name ends with or the second name or the last name of the people mainly are Shah, Khan and so many things like that. ठीक है। तो you can write that dear Shah or dear Khan or dear Ali, but अगर आप फर्स्ट नेम भी लिखे तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, बट कीप दिस इन माइंड कि इफ यू आर वर्किंग समवेयर अब्रॉड देन यू हैव to keep all these rules in your mind, क्योंकि then you have to go for the last name of the person. ठीक है। एक और भी रूल है that if like you do not know whether आपसे चलो शो यार ما خیال د سیګنل پرابلم دی. چې ټیچرانو ته پرابلم وي نو سټوډنټان خو بیا پرېږده. ये तो होगा. قاضي قاضي کوم دی؟ هلکه قاضي راغلی او بیا لاړ.
لکانو میډم وی دغه ما سره کنیکشن نشته وي به زه نن دپاره دا کافي وه. پس کې وي اوس یې میسج کوم ماته. هاي هاي مزه Hello. Hello, ma'am. Yes, it was disconnected. There is a continuous internet issue. Um, where was it disconnected? Can you please remind me? Like I was discussing on the whiteboard. Some salutation. Yeah, I was discussing.
something on the whiteboard? Yes. Yes, ma'am. Hmm. Do you remember that? No, no. No, ma'am. Why? No. Main salutation. Okay, so where is your CR? Like at least किसी और का नंबर मुझे दे दे कि वो मुझे मैसेज किया करे कि देयर इज एन इंटरनेट इशू, तो मुझे उसकी समझ ही नहीं आती, आई कैन नॉट सी, क्योंकि एक और टैब मैंने खोला होता है और फिर इंटरनेट चला जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। तो किसी और का नंबर प्लीज मेरे साथ शेयर कर लें। चले, मैं आपके सीआर से पूछूंगी कि अगर आप क्लास नहीं लेते तो किसी और का नंबर मेरे पास शेयर कर ले, क्योंकि ये सब कुछ होता है। ठीक है, अभी आप लोगों को जो चीज मैं डिस्कस कर रही थी, आई वाज डिस्कसिंग Salutation. जी सबर करें, मैं लोड कर रही हूँ जहां तक मैंने किया हुआ था। जो जो व्हाइट बोर्ड मैंने सेव किया हुआ था, मैं जरा उसको लोड कर रही हूँ। हाँ, सैल्यूटेशन के बाद मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है, लेकिन चले ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक और बोर्ड मैंने सेव किया हुआ था, मैं जरा वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये अभी आप लोगों को ये नजर आ रहा है? आप लोग को ये नजर आ रहा है? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो Yes. it's I was discussing salutation and then I discussed the body with you and then the signature line और postscripts और ये सब मैंने डिस्कस किया, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं। तो आप मुझे साथ साथ बताते रहें, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता यहाँ से कि कहाँ कब डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो आई वाज डिस्कसिंग सैल्यूटेशन दैट इट्स द ग्रीटिंग, जैसे हम डियर सर, डियर मैडम, और वी कैन गो फॉर द टाइटल ऑफ द पर्सन and even the name of the person. ठीक है, but there is a proper way of writing the salutation. कि salutation in most of the cultures you have to look at that. जैसे हम कहते हैं डियर सर और डियर मैडम और चेयरपर्सन और चेयरमैन। ठीक है, तो जब आप ये लिखते हैं यू हैव टू लुक एट दैट कि इन विच कल्चर आर यू राइटिंग द लेटर, because people can mind even the dear word. Now it's a neutral word but people can mind that. ठीक है, then you have to write respected or sir or madam. ठीक है, but in other countries जैसे अमेरिका में है, then you have to look at the another rule, like you have to write the last name of the person because they like to write their names. ठीक है, they mind that when you call them sir or madam. ठीक है, are you getting my point? When you call them sir or madam, they mind such things. Then you have to write the last name of the person with the salutation. Okay, in the salutation line you need to write the last name of the person, and it is a rule for everyone. But if we see in Pakistan, mostly the names end with Khan and Shah and Ali and things like that. Okay, so you can write there Ali, Shah or Khan, but over here if you write the first name of the person, it like doesn't matter, it is
like people do not notice it that much, right? But as I said, that you have to look at the culture, in which culture are you writing the letter, then you have to keep things in mind. जैसे मैंने एक कहानी सुनाई कि there was a chairman and he called me and he asked me that it was a letter, और उस letter पे लिखा हुआ था कि chairperson, so I am not a chairperson, this chairperson, this word is used for a female, okay? So I am a chairman, and then I said that it is out of respect people write chairperson, okay? So इस तरह की चीजें you have to keep these things in mind कि whether people will have a negative reaction or response. तो फिर उसके बाद उन्होंने response दिया and he was like really upset at that he is not a female and they know him that he is not a female. Then I said that it's out of respect people write chairperson, because chairperson is a neutral word, instead of using a chairman, ठीक है? तो chairman थोड़ा सा discriminatory है, instead of using chairman why not to use chairperson, ठीक है? But if you see कि अगर वहाँ पे लोग mind कर रहे हैं, so you need not to go for such words. और जिस तरह जो भी टाइटल्स है तो वो टाइटल्स आप मत यूज करें. जैसे अमेरिका में एज आई सेड कि पीपल माइंड व्हेन यू कॉल देम सर और मैडम, ठीक है? दे विल ऑलवेज मेक यू कॉल देयर लास्ट नेम्स, ठीक है? तो आप उनको, इवन बड़े प्रोफेसर्स भी होंगे तो वो आप सर और मैडम कहेंगे, थोड़ा सा माइंड कर लेते हैं. थोड़ी बहुत चीजें होंगी एंड वी हैव लाइक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं, बट मोस्टली दे माइंड सच थिंग्स, ठीक है? So I was discussing this salutation, and then I said that the body is the main content or the text or the message of the letter. For which purpose we write the letter? We write the purpose in the body, and then there is a complementary clause. We close the body or the body of the letter with some pleasant words or with some स्वीट वर्ड्स, ठीक है? या शॉर्ट पोलाइट वर्ड्स के साथ हम जो एंड करते हैं, दैट इज लाइक yours obediently, sincerely, faithfully, regards, thanking you, best wishes, or things like that. These are the complementary clause. Then we have a seventh one, which is the signature line. We keep 3 spaces after the complementary clause and then we write the signature. We put our signature in these 3 spaces, ठीक है? And then after that we write our name and designation. तो आपका क्या होगा? You can write your name and then you can write the second semester, student of second semester, so that become the we can say the designation. Postscripts are those things when you just forget an important point to write it in the body, so you can write that note or additional remark by writing PS, ठीक है? Postscripts PS और फिर उसके बाद आप वो additional remark लिख देते हैं. In case if you have printed the letter, ठीक है? आपने print किया हुआ है and you do not want to go back and print it again, ठीक है? तो फिर आप एक काम करते हैं, then you write P.S on the page and you write even it's like the postscripts are sometimes handwritten, तो फिर आप hand write भी कर सकते हैं, ठीक है? Now there are 2 other formats that we need to follow for the whole ठीक है, writing a letter. So these formats are basically related to punctuation, where like we need to add punctuations, and there are 3 basic punctuation marks that we use in letters, and they are period, colon, and comma, right? So period है, comma है, and colon है. Period is basically the full stop, जिसको हम full stop भी बोलते हैं, but we call it full stop when we use it at the end of the sentence. We call it period when it just separate the letters of an abbreviation, ठीक है? जब वो किसी abbreviation के letters को separate करते हैं, then we call it a period. Or when it separate the letters in a word, तो फिर इसको हम period बोलते हैं, right? So we normally use period, we comma and colon in letters. तो ये हमारे पास 3 ऐसे punctuation marks है that we put in the sometime in the body and sometime in the parts of the letters. So उनको कैसे use करेंगे, ठीक है? So we have 2 styles and they are open punctuation and standard punctuation format. Open punctuation is basically we call it no punctuation, ठीक है? इसमें हम कोई भी punctuation put नहीं करते.
और standard punctuation में we need to put all the punctuation marks where it is needed, ठीक है. तो mostly comma is used in British style and colon is used in American style, ठीक है. तो colon अगर salutation के बाद हम colon लगाते हैं, that's an American style. If we put a comma, that's a British style, ठीक है. तो ये punctuation marks अगर we are putting those punctuation marks, we call it standard punctuation format or style. Or if we aren't even putting a single punctuation mark, then it is an open punctuation, or we can call it open punctuation, we can call it no punctuation, ठीक है. और standard punctuation को mixed punctuation भी बोलते हैं, ठीक है. Now, as I said that we can call it a period, or period तब बोलते हैं when it just separates the letters of a particular abbreviation. Now, there can be abbreviations can be MPhil, it can be PhD, it can be USA, or it can, जैसे USA में देखें ना, we normally put we should put a period in between the letters, because इसको हम जब आप कोई भी abbreviation pronounce कर सकते हैं, then you need not to put a period in between the letters of that abbreviation. But if you can जैसे आप pronounce अगर कर सकते हैं, जैसे हमारे पास NASA है, NASA is basically an abbreviation of, but इसको हम pronounce कर सकते हैं, but इस abbreviation को then we call it acronym, ठीक है. So अगर हमारे पास acronym है, so we need not to use any, जैसे हमारे पास laser है, laser is also an abbreviation, लेकिन इसको हम acronym इसलिए बोलते हैं because we can pronounce these abbreviations, ठीक है. तो जो भी abbreviation है अगर उसको हम pronounce नहीं करते, जैसे USA, USA, अब ये इसको हम pronounce नहीं कर सके, that's USA, you have to call it separately. Then we need to put a period in between the letters. अब ये format है, लेकिन कुछ लोग follow करते हैं, कुछ नहीं follow करते, right? मतलब USA को अगर आप correctly लिखते हैं, then you have to put periods in between the letters, ठीक है. अब MPhil है इस तरह, तो MPhil में M और fill को हम pronounce कर सकते हैं, so there is a dot between M and fill, ठीक है. तो अगर वो standard punctuation है, we are going to put a period in between the M and fill. But if it is an open punctuation, so then we will just remove this dot or this period which is in between the fill and M, ठीक है. USA में the same is the case with USA. We write USA with no period in between the letters if it is open punctuation. अगर standard punctuation है, then you have to put it there, ठीक है. तो ये हमारे पास punctuation marks है. यहाँ तक clear है? ठीक है. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. हाँ, ठीक है. I hope यहाँ तक clear है. Then we have some two optional parts in the letters. We call it attention line and the subject line. So attention line is when we want to draw the attention of a particular person, or if you want to just attend or just want to one department to pay heed to or letter, ठीक है. So we will be writing the name of that person or the name of that department in that particular organization is attention line में. तो attention line we write it is that ATTN with a colon, लेकिन इसको सिर्फ ये abbreviation है, and we write them in capital letters, ठीक है. And then the subject line. Subject line is basically the purpose of writing a letter. For which purpose? It can be an order. It can be an order, और आप फिर उसको like we can write subject line into two methods. There are two methods that we can follow. We can sometime write, if it is an order letter, we can go just for the order number. We can just go for the code of something. If you want to order a product, so you write only the code of the product, ठीक है. तो आप फिर कहते हैं आपका order number ये, and they know their products के उनके ये codes होते हैं, ठीक है. So if you want to order a product, in the subject line you just write the code of the product. उसमें फिर आप phrase नहीं लिखते. But there is a proper rule for writing. Attention line की मुझे लगता है समझ आ गई है कि attention line is basically it's a part of business letter, लेकिन ये optional है. आप
you can use it or you cannot, depending on the situation. Okay, if it is a large organization or there are so many departments, and if you want to draw the attention of a particular department, so you can go for the attention line in a letter. ठीक है, तो फिर आप उसमें you write the name of the person and the title of the person, and sometimes you write the name of the department and the name of the organization. ठीक है, तो फिर that's basically when you want to write that letter specifically for that department or person. Subject line is that line, we call it the aim or the purpose of. So what is the purpose? वो purpose हम body में लिखते हैं, but what is the name of that purpose, we write it in the subject. ठीक है, तो subject line हमारे पास, जैसे मैंने आप लोग को कहा कि it can be only the order number or it can be only the code of a product, but if you want to apply for a scholarship or for a job or for anything where you need to write a phrase there, ठीक है, तो जब भी हमारे पास phrases होते हैं, हमारे पास clause होता है, ठीक है, तो उसको हम कैसे write करते हैं? There is a rule that you need to follow, and it is not only limited to subject line. You can use it, or you need to have this rule in your mind while writing the title of something, while writing the topic for something. For example, if you are asked to present a topic on the whiteboard, तो जब आप white board के पास आ जाते हैं and you write the topic, so the first impression you give about yourself is that how you write the topic on the whiteboard. ठीक है, तो topic write करने के लिए एक तरीका है, and the same method is used for writing the subject line in letters, and that method is basically to know the word classes or parts of speech. ठीक है, parts of speech को हम word classes भी linguistic में बोलते हैं, and that is open class words, and again they are divided into two classes, and they are open class words and closed class words. तो open class words वो है जो they are open for addition. Closed class words या वो parts of speech है that they aren't open for addition. You cannot just change the meaning, you cannot add any suffix or prefix with that, or you cannot even change the form of that word. ठीक है, तो हमारे पास जो open class words है, they are basically verbs, nouns, adjectives and adverbs. ठीक है, they are the open class words because like you can form the forms of the verbs, you can make the forms of the verbs, जैसे begin, began, begun है. ठीक है, अब हमारे पास कोई noun है तो आप उसको adjective बना सकते हैं, आप उसको you can change the meaning of that word, right? Like you can change the meaning of that word, you can change the grammatical category even. जैसे हमारे पास kind है, so kind, इसको अगर we can, if we use any prefix un, so we can make it unkind, so you change the meaning of the word. And beautifully is आप लोग मुझे सब सुन रहे हैं ना? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, and if there is beautiful, so beautiful is an adjective, and if we add ly or a suffix with it, so you can change the grammatical category and making it adverb from an adjective. तो adjective से जब आप adverbs बनाते, so you are changing the grammatical category. So when a class is open for addition, and when you can change their meanings, when you can change the grammatical category of these classes, so they are open classes, open class words. Closed class words हमारे पास prepositions है, conjunctions है, interjections है, articles है, तो ये सारी चीजें जैसे to, from, toward, into, and, but इसके साथ you cannot add any suffix or prefix or any bound morpheme. ठीक है, जब इनके साथ कोई any bound morpheme add नहीं कर सकते, we cannot change the meaning, we cannot change the grammatical category, so they are closed class, they are closed for addition basically. ठीक है, so now the purpose of this whole discussion about word classes was that how to write the subject line, keeping these word classes in the mind. Okay, if there is any open class word in the subject line, जैसे कोई भी subject line हो, for example you want to apply for assistant engineer, for the post of assistant engineer, so the subject line would be subject and a colon and then applying for the post of assistant engineer.
ठीक है। सो इसमें अप्लाइंग क्या है, इट्स एन ओपन क्लास वर्ड। पोस्ट क्या है, ओपन क्लास वर्ड। असिस्टेंट क्या है, इट्स एन ओपन क्लास वर्ड। इंजीनियर अगेन इज एन ओपन क्लास वर्ड। तो अप्लाइंग का ए भी कैपिटल है, पोस्ट का ए भी कैपिटल है, असिस्टेंट का भी ए कैपिटल है, एंड इंजीनियर इज अगेन ई इज कैपिटल फॉर इंजीनियर। सो व्हेन वी हैव ओपन क्लास वर्ड्स in the subject line या फिर कोई भी topic that you write on the whiteboard for the presentation, so you have to keep this in mind that you need to capitalize the first letter of every open class words even if it is in the middle of the sentence, ठीक है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, देन यू नीड नॉट टू कैपिटलाइज दोज वर्ड्स, ठीक है। अगर ये आप अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, इफ इट वाज अ पार्ट ऑफ द कंटिन्यूस राइटिंग, तो देन आप इसको पी में कैपिटलाइज ए कैपिटलाइज नहीं कर रहे, ठीक है। एंड यू हैव टू कीप ऑल द क्लोज क्लास वर्ड्स इन लोअर केसेस, जैसे फॉर लोअर केस है, दी लोअर केस है, ऑफ लोअर केस में है, ठीक है। सो दिस इज द रूल दैट यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर राइटिंग द सब्जेक्ट लाइन और फॉर राइटिंग द टॉपिक्स ऑफ द वी कैन से द presentations that you when you present a topic, और for headings जैसे आप headings देते हैं, अगर वो phrase की शक्ल में है, so then you have to follow this rule, ठीक है। and you will see it when you will be writing reports about your projects, जैसे आप projects करेंगे बड़े बड़े, फिर उसके बाद आप reports लिखते हैं, तो जाहिर बात है उसमें फिर headings भी आ जाती हैं, तो जब वो आप वो headings लिखेंगे उसमें खुद ही आएगा, उसके वो underline हो जाएगा, तो then you have to capitalize this first letter, this letter and this letter, और वो computer में खुद ही आ जाता है, ठीक है। तो you will see it that how we write the heading, how we write the especially the topic on the whiteboard या कोई भी topic किसी भी चीज के लिए, if it is a phrase then you have to follow this rule, ठीक है। Now I was discussing that we have four basic formats of, like I discussed all the parts and then how to write these parts, ठीक है। and then like in the start I said that we have four formats for, we have block, modified and semi block, ठीक है। so block is that all the parts of the letters are aligned towards the left margin, इसको सारा हम left margin, और left margin ये है when you open a computer or like you open a page in the computer, so this is the left margin towards your left, ठीक है, और ये right margin है, ठीक है। तो जो भी जितने भी parts of the letters है, we keep them toward the left margin. और modified block में I'm going to make you see these examples, there are samples in the document that I have already shared with you, ठीक है। and modified block में then we have three parts या फिर हम two parts कह लेते हैं, ठीक है, that these two parts are mainly, ठीक है, they are right in the middle, we put them right in the middle or somewhat towards the right margin, ठीक है। और वो three parts कौन कौन से हैं, it's the letter head, the date and the complementary clause, ठीक है। semi block is that block in which we have indentations in the body में indentations होते हैं, और वो indentation क्या है, these are the 4 and the 5 spaces that we keep, या 1.5 inch in the body, ठीक है। वो कैसे रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव वन सेंटेंस, तो एक सेंटेंस तो जाहिर बात है हम एक ही सेंटेंस लिखेंगे, बट इफ वी हैव 2 or 3 paragraphs, then what we need to do is that we will have this particular shape, ठीक है। और ये शेप कैसे आएगा, नाउ आफ्टर द सैल्यूटेशन जैसे मैं कहती हूँ डियर सर, आफ्टर दैट वी पुट अ कॉमा, लेकिन अगर वो फुल ब्लॉक है, सो आई विल start with the text as it is stated, अगर मैं लिखती हूँ या फिर किसी भी text से I'd start, so I will keep the same arrangement as I write dear sir or the salutation. But if it is a semi block, yeah, if I keep indentation, then I will keep 4 or 5 spaces from the same arrangement as I write the salutation, and then I will write the first sentence of the first paragraph from here, ठीक है। और सेकंड सेंटेंस दोबारा उसी अरेंजमेंट से, द सेम इज द केस विद द थर्ड एंड द फोर्थ सेंटेंस, एंड इफ द पैराग्राफ एंड्स हियर and if I want to have another paragraph, so I will write the first sentence of the second paragraph right from the same arrangement as I have written the first sentence, and the same is the case with the
first sentence of the third paragraph, you need to keep the same arrangement as you keep it for the first sentence of the first paragraph. And the rest of the sentences from the same arrangement as salutation and the rest of the parts of the body of the letter. ठीक है, लेकिन अगर आप देखें there is like कंप्यूटर में एक और चीज है, जब आप उसको ऊपर ऐसे ओपन कर लेते हैं ना किसी भी टैब को, कि ऑफिस को, MS ऑफिस को जब आप ओपन कर लेते हैं, when you start टाइपिंग और फिर आप व्यू कर लेते हैं, पेज लेआउट कर लेते हैं, फिर उनमें ऑप्शन आ जाते हैं. सो when you click one option, तो आपके ये बाकी भी सेंटेंसेस जो है इट गेट्स टू दिस पोजीशन. तो दैट्स ओके, दैट्स एक्सेप्टेबल कि आपके बाकी जितने भी सेंटेंसेस है इट गेट्स टू दिस पोजीशन. कीप 4 or 5 spaces all the sentences. ठीक है, नाउ आई वांट टू शो इट टू यू. और मॉडिफाइड, सेमी मॉडिफाइड क्या होगा कि इसमें हैविंग बोथ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेमी एंड मॉडिफाइड. मॉडिफिकेशन में ये था कि वी आर हैविंग 3 parts as the letterhead and the braid and the complementary clause towards the राइट मार्जिन, और इसमें बॉडी इंडेंटेशन है. सो व्हेन वी हैव सेमी मॉडिफाइड देन वी विल हैव बोथ द चेंजेस इन दैट. ठीक है, तो आई वांट टू शो इट टू यू. इसमें जो भी मैंने डॉक्यूमेंट आप लोग के साथ शेयर किया हुआ था कल, वो ये है. ठीक है, अब ये ओपन हो गया ना. ये बाकी आप लोग खुद पढ़ें क्योंकि ये बहुत ज्यादा है तो अभी हम नहीं पढ़ सकते क्लास में. सो इट्स अप टू यू. आप सब्जेक्ट लाइन है, इनिशियल्स है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने क्या किया इसमें चीजें, ये सारा एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस लेटर्स हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए, या पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर्स है. ठीक है, तो ये बहुत डिटेल, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स उन लोगों ने दिए, जैसे पोस्टस्क्रिप्ट्स के मैंने अभी आप लोगों को बताया. ठीक है, ये अभी इन लोगों ने एग्जांपल्स भी दिए हैं कि व्हाट आर पोस्टस्क्रिप्ट्स. ठीक है, तो आई वांट टू शो लेआउट्स. ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि फॉर्मेट्स क्या है. ब्लॉक फॉर्मेट एज आई डिस्कस्ड विद यू. सॉरी, ये किधर था. अब ये यू एटीट्यूड, वी एटीट्यूड, ये आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं. ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि आपने कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है. ठीक है, अब ये हमारे पास नाउ दिस इज ब्लॉक लेआउट. यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा है ब्लॉक लेआउट. इसमें फिर देखें ना, ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द लेटर हेड और हेडिंग आर अलाइन टू द लेफ्ट मार्जिन. अब इसमें ये बात गलत है. गलत इसलिए है क्योंकि ब्लॉक लेआउट में सारा कुछ टुवर्ड्स द लेफ्ट मार्जिन होता है. ठीक है, अब ये देखें इट्स द लेटर हेडिंग, तो ये भी इस मार्जिन पे है. ठीक है, सो ऑल द पार्ट्स ऑफ द लेटर्स आर अलाइन टुवर्ड द लेफ्ट मार्जिन. ठीक है, तो ये लेटर हेड है, लेकिन आपने ये लिखना नहीं है. व्हेन यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन और अ लेटर यू नीड नॉट टू राइट हेडिंग और डेट और इनसाइड एड्रेस. इट्स जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. ठीक है, except the subject line you cannot write these names because these are just the names of the parts. You cannot write it letter heading and then you will start with the letter heading. Okay, just write the letter heading or the address. So this is the address of the sender and this is the date and this is the receiver address, this is the salutation, this is the body and this is the complementary clause. And the signature block, as I said, इसमें 3 lines छोड़ के over here you put your sign and this is the name of the person. ठीक है, और enclosure में लिखा हुआ है कि copy of cancelled checks जो है वो enclose किए हुए हैं. ठीक है, और अगर ये if it was a cover letter तो इसमें फिर आप लिखते copy of your CV.
उसमें इनक्लोज है, ठीक है। अब मॉडिफाइड क्या है, इन द मॉडिफाइड ब्लॉक इट्स द लेटर हेडिंग इज टुवर्ड्स द राइट मार्जिन, और उसमें फिर कहते हैं कि कम्प्लीमेंट्री क्लोज भी टुवर्ड्स द राइट मार्जिन है। और सेमी ब्लॉक में फिर क्या होता है कि एज आई सेड कि वी कीप 4 or 5 spaces in the computer and we start the first sentence of the paragraph right from here. इस यहाँ से शुरू नहीं करते कि यहाँ से होना तो चाहिए था कि I received यहाँ लिखते, but if it is semi block so we have to keep indentations. तो जब indent करते हैं and when you click the computer format over here you will see कि वो सारे sentences एक साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। So all of them are having indentation, so it's acceptable in the computer. लेकिन if you are writing on a page, then you have to keep indentation in the first line of the paragraph, the first line of the second paragraph, and the first line of the third paragraph, and so on. I hope this is clear for today. Yes, ma'am. कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। I want to stop the recording. आप